Good morning, students. Myself, Sapna Gautam, Science teacher, Sarvit Kali Vidya Mandir Fazilka. Students, we have discussed chapter 14, chemical effects of electric current, in previous videos, and today we are going to start chapter 14, next topics of this chapter. So, students, today we will discuss chemical effect of electric current. Chemical effect of electric current. I have explained heating effect of electric current, magnetic effect of electric current, and now we are going to start explaining of chemical effect of electric current. By the means of electric current, what are the main chemical reactions occur in conducting solution? Let's start. So students, first of all, we take a circuit, and first of all, in the circuit we take carbon rods from discarded cells. We take carbon rods from discarded cells and clean their metal caps with sandpaper. These are carbon rods, and clean the metal caps with sandpaper, and we take some water in a beaker. We take some water in a beaker and place these carbon rods that are known as electrodes. इनको हम electrodes कहते हैं. These carbon rods are placed in a beaker filled with water, and make sure that metal caps are keep outside from the water. Okay, so this is circuit. We add battery, and positive terminal of the battery and negative terminal of the battery are joined by the wire to the carbon rods, metal cap of the carbon rods, metal cap of the carbon rods, and when electricity passed in the circuit through the battery, then after some time we will see that some bubbles are seen around the both electrodes. वाटर का फॉर्मूला H2O है, and water is made up of hydrogen and oxygen, and when electricity passed in the circuit, then water dissociates into hydrogen and oxygen is deposited on the carbon rod. Oxygen is deposited on the carbon rod, on the electrode that is joined with the positive terminal of the battery, and
hydrogen gas bubbles, hydrogen gas bubbles deposited on the other electrode that is joined with the negative terminal of the battery, and we will see that when electric current is passed through the circuit, through the battery in the circuit, then electrodes that are immersed in water dissociates into hydrogen and oxygen due to the electric current passed in the water. Then it dissociates hydrogen and oxygen deposited on the electrode that connected with the positive terminal of the battery, and hydrogen bubbles appeared on the electrode that joined with the negative terminal of the battery. This is the chemical effect of electric current. Means to say, when electric current are passed in the circuit through battery, then some chemical equations are happen in this system, and after that, after chemical reactions, there is chemical effect will be seen in the circuit and the color of solution. And we also have added some salt in it. We also have added some salt in it that makes the water conducting. आपको मैंने बताया था कि distilled water is not a good conductor of electricity, is a bad conductor of electricity. उसमें electricity conduct नहीं होती. And if we add salt solution or lemon juice into water, then it makes conducting, ये conducting बन जाता है और electricity conduct करता है. तो that is the chemical effect of electric current. And there is one application of chemical effect of electric current, that is electroplating. और उससे पहले हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल इफेक्ट का, कि इफ वी टेक a piece of potato, a half piece of potato, there is compass needle, if the free ends of wire which is connected with the battery, if there is free ends of the wire, we can join the wire into the potato piece. Then after some time, when current is passed in the circuit through the battery, then we will see after some time there is green blue spot appeared. There is greenish blue spot is appeared after the electric current is passed into the circuit, and the end of wire which is connected with the positive terminal of the battery, that has greenish blue spot in the potato. Okay, this shows that after conduction, after electric current is passed in the circuit, there are some chemical reactions happen, and these are also known as chemical effect of electric current, and
these compass needle also deflects in that case. Okay, so these are the chemical effects of electric current, and there is one application of chemical effect, one application of electric current chemical effect. Chemical effect मीन्स टू से इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है. कहाँ ये यूज़ होती है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस. इलेक्ट्रोप्लेटिंग it is a process in which a layer of metal is deposited on another metal by the means of electricity. मीन्स टू से इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट. प्लेटिंग मीन्स जो लेयर दूसरी मेटल की लेयर पर डिपॉजिट हो जाती है उसे प्लेटिंग कहते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ए लेयर ऑफ मेटल is deposited on another metal by means of electricity. इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास होती है तो वैसे ही let's see how electroplating. We take copper rods and connect the positive terminal of the battery and negative terminal of the battery to the copper rods, and these are immersed in the copper sulfate solution. When we take copper sulfate solution in the water, and this make is more conducting, and we will see that wire of positive terminal and negative terminal join to the carbon rods that immersed in a beaker has copper sulfate and water, and we also add some sulfuric acid, dilute sulfuric acid, H2SO4. Dilute sulfuric acid also add in the copper sulfate solution that make it more conducting, and when current is passed through the battery, then carbon from the carbon rod is deposited. First of all, copper sulfate is dissociated. Copper sulfate dissociated in copper plus sulfate. कॉपर एंड सल्फेट आयन में ये टूट जाते हैं. कॉपर एंड सल्फेट ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, कॉपर सल्फेट. और व्हेन कॉपर सल्फेट dissociates in copper and sulfate ions, then we will see copper rods. These rods
the copper from the copper rod, then deposited on the another rod, deposited on the another rod, and from this rod copper is drawn into the copper sulfate solution. इसमें से कॉपर सल्फेट, कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर चला जाएगा, इस रॉड में से कॉपर निकल के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला जाएगा, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो थे वो इस रॉड पर जमा हो गए। तो इस तरह से इनका बैलेंस जो है वो सही रहता है, बैलेंस बना रहेगा। तो इसके जो कॉपर हैं वो कम नहीं होंगे, इसमें से कॉपर इसमें जाते रहेंगे। इस तरह से एक कॉपर जो है, एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल पर दूसरी रॉड पर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये हमने रॉड जो है ये हमने एक रॉड कॉपर की लेनी है, एक रॉड हमने दूसरी लेनी है, ताकि हम एक मेटल की जो लेयर है वो दूसरी पर डिपॉजिट करवाते रहें। एक कॉपर की रॉड ली है और एक हमने दूसरी रॉड ली है दूसरे मेटल की, और जैसे ही ये इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, तो इसमें से कॉपर इसमें कॉपर सल्फेट में ड्रॉन होता जाएगा, जिससे कि बैलेंस इनका इक्वल रहे। तो दैट इज़ द when one metal is deposited on the other metal, that is known as electroplating. And electroplating is like silver and gold, they are electroplated on less expensive ornaments. They are electroplated on less expensive metals. जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं उन पर सिल्वर और गोल्ड की लेयर डिपॉजिट की जाती है, जिससे कि वो शाइनी अपीयरेंस के दिखाई देते हैं। लाइक अदर मेटल, इफ़ वी टॉक अबाउट क्रोमियम, क्रोमियम metal has a shiny appearance, and deposited, electroplated on iron articles like bath taps, बाईसाइकिल की जो रिम्स होते हैं या बाईसाइकिल के हैंडल होते हैं, उनकी जब शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, उनका मेटल उनमें से उतर जाता है, तो उस पर भी क्रोमियम की लेयरिंग की जाती है। और बाथ टैप्स, जो टैप्स होती हैं वो भी शाइनिंग अपीयरेंस दिखाई देती है हमें क्रोमियम की प्लेटिंग की वजह से। तो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है आयरन के आर्टिकल्स पे भी। और जो टिन होते हैं, टिन जैसे आप देखते हो कि मार्केट से आप फूड लेके आते हो तो टिन में होता है वो, तो टिन जो है उसकी प्लेटिंग की जाती है, टिन की प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। किस पर की जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन। आयरन में रस्ट जल्दी लग जाता है, वो करोडेड हो जाता है, और जैसे ही आयरन करोडेड होता है तो टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन पर कर दी जाती है, जिससे कि फूड जो उसमें स्टोर होता है वो उससे रिएक्ट नहीं होता। और गोल्ड और सिल्वर का आपको मैंने बता दिया कि गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लेस एक्सपेंसिव मेटल्स पर की जाती है, जिससे कि उनकी अपीयरेंस एकदम शाइनी हो जाती है। और इसके अलावा क्रोमियम डज नॉट करोडेड, क्रोमियम हैज़ शाइनी अपीयरेंस। इट इज़ वेदर इट इज़ कॉस्टली एक्सपेंसिव metal, but it has many applications that is electroplated on many metals. Okay, and if we talk about bridges are made up of iron. Bridges are made up of iron, and when they are wear off, they are torn off, then there is also electroplated by
chromium. Okay, so students, this chapter has finished now, and you have to read out and learn this chapter's main points and write down question answers on your fair notebook. Thanks. Have a nice day.